Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. So we'll start the unit number 2, Yes, sir. laser and fiber optics. Okay, so first of all, we'll start the laser and then we'll go for the fiber optics. Basically, all of you know interference, diffraction, polarization. So with the help of this, we had proved the light has a wave nature, and that is particularly transverse wave nature, right? Yes, sir. And also we had studied the property of light, like such as interference, diffraction, polarization, in which we had learned the steady interference pattern. And what is the condition required for the steady interference pattern? Sources should be coherent. This Right, should be so going. it should be monochromatic, coherent, close to each other, and sharp. Yes, Okay, sir. so out of this, coherence is a very important property. Okay, and we need a coherent sources, and we know from one source we have to derive the coherent sources. We cannot take two different sources and we say that two are coherent. It is not possible, because even though the waves are emitted from the two sources, uh, supposed to be said with a crust or trough, but further as time changes the phase will be changed. Phase should not be constant, so in that case we cannot say these two sources are coherent. So kept it in mind, so coherent sources which can be derived from the single source. Okay, and that produce the uh, steady interference pattern. So our necessary condition for steady interference pattern is what? Coherence. Okay, so how the light is emitted from any source? Anybody can tell me how the light is emitted? So light is electromagnetic wave, Yes, sir. Yes. and when an accelerated charged particle moves, it produces electromagnetic radiation. Very good. So indirectly, we can say that like a vibrating electric charge or oscillating electric charge or accelerating electric charge. Okay, so that emits the light, and that emitted light is mostly incoherent. That is not coherent in nature. Okay, so because its phases varies with respect to position and time, we can say that. Okay, so we need to produce that coherent sources. So how many methods we know to produce the coherent light from the single source? So we know the basic two types. One is using the double that Young's double slit experiment, so through which actually it is a division of wavefront and division of amplitude. Okay, so through the division of wavefront, we divide the wavefront using a Young's double slit experiment, correct? Yes, sir. And division of amplitude means we divide the intensity with the help of like a thin film, हमने जो हमें last derivation देखा था. So when the light is incident on thin film, which is reflected from the top boundary, and one is reflected from the bottom of that thin film, so two rays reflected back, means from one ray we are derived the two rays. Are you getting this or not? See, suppose we are saying that this is our surface and this is the next or say second layer of the surface. So when the light is falling on it, it is reflected from this boundary, also it is reflected from this boundary. So these two ray are now coherent. So in using one ray we are derived into two ray, so we are going to divide the amplitude here. And second one, we know that this is a one slit and this is second slit. So when the source is on, it emits the wavefront. So this wavefront is incident here, and that is a secondary source again. So this is second that Young's double slit experiment. Okay, so here we divide the wavefront, here we divide the amplitude. So these are the two methods to obtain the coherent sources using the single source. Okay, so what do you mean by coherence here? See, this is an incoherent light. So when the light is emitted from this bulb, the all the waves emitted with a different um, phase. The phase is not constant. So if we say phase difference phi is constant or zero, then these waves are in phase, or say we can say that is a coherent. So coherence light में सबसे important होता है phase difference. And see here, the laser light is a coherent source. Laser is a coherent source of light which emits the wave which are in
same phase. So if we Yes, find the sir. phase difference at any point, suppose here, here, so that phase difference is either constant or some fixed value. Okay, so we can say in multiple of n pi looks like this. So remember, the phase difference is the plays very important role in the coherency. Then in coherent, you can imagine here the phase difference is throughout changing. So here the laser is a special type of light which emit the coherent beam. Okay, and what is the long form of laser then? Can anybody know the laser whose long form is what? Acronym we can say. Laser, L for Light amplification something. A for Amplification. amplification, S for Stimulated. stimulated, E for Emission. Emission. emission, and R for. Radiation. Radiation. So the long form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. So stimulated emission is a very important here. Okay. So what is laser? Light. We are, suppose this is our light. So this light we have to amplify. How we amplify? Amplify means what? To increase the strength of signal. How we amplify this? How we amplify? By using the process of stimulated emission. So how we amplified the light? By using stimulated emission of radiation. Okay, so you should have to know this. So light amplification by stimulated emission of radiation. So at least you have to know what is the long form of laser. Okay, any doubt here? No, sir. No, sir. No, sir. And laser light itself polarized light. Okay, itself polarized beam, laser beam is. So what are the special characteristics of laser or some special properties of laser light? Can anybody tell me? Sir, it is having same phase. So that's why we are calling that is a coherent beam. So laser is a coherent. See, some property that you have to know. Laser की क्या speciality है? तो first laser is a coherent. Sorry, coherent beam. Second one is it is a monochromatic. Excuse me, sir. Yes. Sir, roll number 32 wants to join. She was having network issue. So okay. Third one, coherent, monochromatic, then unidirectional. Okay, and fourth one is a intense. So these are the four important characteristics of laser beam. Laser is a okay. Okay, coherent beam. Laser light is a monochromatic. Have you seen the laser in multicolor? Never. We No, observe sir. the laser light is No, either sir. in red, blue, green, etc. So this is available in a single color. Then unidirectional. This laser beam is not spreading like ordinary source. Suppose you have this ordinary lamp and the lamp is emitted the light in all direction. So that is not observed in case of seer. In this bulb, the light is emitted in all direction. But instead of this laser beam is there or laser light is there, it is moving in a straight line like. Okay, so unidirectional, it has a single direction. And then intense, the intensity of laser light or laser beam as compared to the ordinary source, it is very high. So you can at least remember these properties of laser or characteristics of laser. Okay, so this is basic of the okay, laser. Then see, we are just see the difference of this ordinary light and here okay, laser beam. So it has a many wavelength. The light is emitted from it, it consists the different wavelength. Then multi-directional light is there, incoherent beam is there through the ordinary. But if we say the laser beam, so it is monochromatic, unidirectional, coherent, you know,
intense like this. So you should just differentiate this. So see, this is the slide. What is the laser? Laser is a light amplification by stimulated emission of radiation. So keep it is in mind. So at least the long form of laser. So the important thing is here what? Stimulated emission process. You have to know this. What is stimulated emission? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. can we add one more property? That the Yes. wavefronts are plane because it travels Uh, in one direction only, na? So huh. spherical and So cylindrical are not possible. not possible. You can take a plane wavefront in that case. Yes, you can take it. Now see, but basically we focused on this four characteristics. So first one is a highly coherent, means the all waves are in phase. Second one is monochromatic, it is observed in a single color. Unidirectionality, it has a particular one direction, and brightness. So these are the four characteristics you can consider. More, some more are there, but these are the some special. Okay, that is not observed in other. Okay. So what is the meaning of same phase? Again, remember, phase difference is constant or zero. Just keep it is in mind. It's a very important because most of the students are not able to understand what is phase difference constant means. So highly coherent, when we call the light is coherent beam if the phase difference between the waves which are emitted from the source having phase difference or between the phase difference is constant, some fixed value, or like n lambda, n pi, multiple of n pi. So n is 1 2 3 like, and 0. So same amplitude means intensity, extremely bright high intensity. Then wavelength, monochromatic single color like red, blue, etc. Unidirectional. Okay, and that's why the divergence is less. You can add the one more property, less divergence. Okay, so less divergence means spreading is very less. See, suppose this is the beam of laser. You can see here. If we are just focusing on this beam, so this is a laser beam, right? And this laser beam, if you observe here, so it's very like कितना spreading दिख रहा है ये, very small spreading is there. You can see here it is almost very close. यहाँ पे थोड़ा सा rise हुआ है, यहाँ पे थोड़ा और rise, so it is spread. But if you observe the normal light and which emits the light through the torch, so it will travel like this wavefront. Okay, so you can imagine that spreading is more, but here the spreading is very, so divergence is very less in the laser beam, and that's why it can travel over the longer distance without loss of energy. That energy doesn't lose, it can travel over the longer distance. So these are the some characteristics of laser. The question may be asked on it. Then in 1960, okay, that Memon, this is the name of scientist, invented first ruby laser, which is a first optical laser. Okay, and this is the picture of this ruby laser. Here is the spiral tube you can observe here. Okay, and that okay. Next in 1960, in the same year, Ali Javani is the Indian scientist, invented the first gas laser, that is a helium neon laser. Okay, it is a gas laser. Then then come to the what requirement of lasing action. So which thing is required for the laser? So it is very important, that is the requirement of lasing action or importance point requirement of the laser. Okay, so someone is want to join the class? Yes, you join or not? Yes, anybody want to join here? No, sir. Okay, कोई पूछ रहा था बीच में ना. See, okay, come to the main point. Absorption of photon. What is photon? First of all, tell me. Can anybody tell me what is photon? It's a packet of Packet energy. of energy. As per the de Broglie's, Discrete packet of energy in the it form is of a, h nu. okay, it is a quantum mechanics phenomenon. Like energy is not emitted or absorbed continuously. It is emitted or absorbed in the form of packet or bundle or that is called as a quanta. So the energy of that quanta, that is called as a photon.
So photon energy is depends on its frequency, and photon energy E, which is equal to h nu. So what is the photon energy? Energy of photon. H nu. H nu. H nu. So h is what? Time constant, and nu be the frequency of that Frequency. photon. Okay, so it is in terms of like you can say the light. Okay, photon means in terms of light. So what is absorption of photon? So by the atom which are in ground states. Okay, so I'll explain what is ground state and excited state first, and then we'll discuss the next point. So see here in this figure, you'll observe the two things. One is what? E1 be the our E1 is what? Ground state. Okay, so this is a ground state. So what does mean by the ground state? What is the meaning of ground state? And this is a excited state, ground state, and this is what? Excited state. बोलते चलिए समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Otherwise, I am Yes. going to explain only, and you are just shutting down. So it's not accepted at all. Let me tell you. Ground state means where atom can stay for the longer time. Means maximum time atom can stay here. This atom, and this atom does not require what? Can you tell me what does not require? Energy. 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 So it can stay for here for long time. Okay. So this is a ground state. Now you can explain this laser theory by considering this as an atom, or you can say the electron. अगर किसी बुक्स में इलेक्ट्रॉन्स दिया है, so don't get confused. Okay, so this is considered to be as like atom or say electron. So here I can say ground state, it is a lowest energy state where atom or electron can stay for the longer time here. They doesn't require the energy. It's a very less energy state. Clear? So that's why the number of atoms or electrons you can observe in that lowest energy state. And now the excited state is a higher energy state. Okay, this is a stable state, you can say. This is a what? Yes, sir. Stable state, you can say. And this is what? Unstable state. Okay, so when atom which are in ground state and some external energy, light और फोटोन एनर्जी कम्स, एंड दैट फोटोन एनर्जी, यहाँ से कोई मान लो फोटोन आ रहे हैं और इस फोटोन की कुछ एनर्जी है खुद की, वो मानते हैं कि एनर्जी ई एच न्यू इतनी है, लेकिन वो एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी डिफरेंस इतनी है. मान लो यहाँ की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे तो हाउ मच डिफरेंस इज देयर? 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया, फोटोन जो आ रहा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है. अब ये फोटोन एनर्जी किसके साथ इंटरेक्ट होगी? इस एटम के साथ. इस एटम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये एटम क्या करेगा? एब्सॉर्ब दिस एनर्जी. ये फोटोन एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, एंड इट इज जंप इनटू द excited state because this atom gain the sufficient energy. Suppose this photon have an energy of 7 electron volt, and even though that is interacted with this atom absorb the energy, and atom is jump, but it cannot jump up to the excited state. It fall down. You can imagine like this. Yes, sir. So this atom, if the energy difference is this, then and then that can be goes to the excited. This is called as a excitation. This process is called as what? Excited. And when the atoms comes from ground excited to the ground, De-excitation. de-excitation, or you can say the transition here, transition from ground state to the excited state. Got it? So the concept is this: initially atoms are rest in a ground state. Photon whose energy is E is equal to h nu, which is E2 minus E1, interact with this ground state atom, then atom absorb the energy and goes to the excited state. Now where is our atom? In excited state. So this is called as a absorption, photon absorption. समझ में आ गया?
Yes, sir. तो अब हमारी सिचुएशन है कि फोटोन एब्सॉर्ब करके एटम चला गया एक्साइटेड स्टेट में, बट द हियर द lifetime of this excited state is very short. For hydrogen atom, say, and in general, the lifetime of excited state is 10 to the power minus 8 second. How much? 10 raised to minus 8. 10 It's- power minus 8 seconds. Okay, it means what? The photon energy comes that is interacted with the atom which are in ground state. They jump into the excited Excited state, state. and now atom is here, and that atom can stay here only for 10 to the power minus 8 seconds. Okay, what happens after this time? It's a very short time interval. So once the atom is here and that completes the lifetime, it has to fall down spontaneously, and they have to release their energy. तो ये atom को टाइम खत्म होने के बाद इसे डी एक्साइटेशन होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, एंड व्हेन दे फॉल डाउन बिफोर, ओके, सो दैट इमिट द एनर्जी, सो रैपिड डिके ऑफ नॉन रेडिएटिव, एंड जो एनर्जी रिलीज होगी, समझो एटम यहां से यहां आ रहा है, सो दे रिलीज द एनर्जी इन रैंडम डायरेक्शन. ये क्या करेगा? रैंडम डायरेक्शन में ये एनर्जी को इमिट करेगा. कितनी एनर्जी इमिट करेगा फिर वो? E is equal to h nu, H nu. and that is E2 minus E1 again. जितनी एनर्जी उसने गेन की थी 8 इलेक्ट्रॉन मान लो, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये इमिट करेगा रैंडमली, एंड दिस रैंडम एनर्जी is not useful, that is called as a non-radiative decay or non-radiative emission. So ये हमारे काम की नहीं होती है, and this is called as a spontaneous emission. Spontaneously emit the radiation. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so that is not useful for us. समझ गए? अब दो स्टेप हो गई. This is the second step. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? E is equal Absorption to of H energy. nu किया, एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड में चला गया. अब यहाँ का लाइफ टाइम ध्यान में रखिए, वो खत्म होने के बाद डी एक्साइटेशन हुआ, एंड वाइल डी एक्साइटेड दे रिलीज द एनर्जी इन रैंडम डायरेक्शन, दैट इज नॉन रेडिएटिव डिके. ओके, एंड इट्स अ फास्ट ट्रांजिशन कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस बाय इट्स ओन accord, स्वतः ओन. Yes, sir. ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Then this is not useful for us. Then next we need to learn the stimulated emission. Is there or नहीं है? एक चेक करना पड़ेगा. See. यहाँ पे आ गया. Then what is stimulated emission? See, continuously sequentially देखेंगे stimulated emission. अब हमें पता है कि photon is incident on ग्राउंड स्टेट एटम, ध्यान में रखिए. सो वो एटम कहाँ चला गया? Excited state. एक्साइटेड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम खत्म हो गया तो कहाँ गया? Ground state. और उसके पास एनर्जी कितनी होगी अब? लो एनर्जी, E1. है ना, जो भी E1 है. अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए. नाउ वी आर सेइंग दैट द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट. एटम कहाँ पे हमारा? Excited state. एक्साइटेड स्टेट में. और इसके पास कितनी एनर्जी है? E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. Yes, sir. अब यहाँ का लाइफ टाइम टोटल 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड है, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है. दिस टाइम इज नॉट ओवर. एटम जस्ट आ चुका है यहाँ पे, और तभी एक्सटर्नल फोटोन उसके साथ इंटरेक्ट होता है. एक्सटर्नल फोटोन क्या होता है? इसके साथ इंटरेक्ट होता है. अब बिफोर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम the excited atoms interact with the photon energy, and now this photon make a forceful transition to the ground state. इस एटम को क्या करेगा? वो फोर्सफुली नीचे ढकेल देगा. समझ में आ रहा है? Don't think कि this Yes, sir. photon energy is incident on it and it goes to the again higher energy state, because already this is energetic. It doesn't require any external energy.
So this energetic atom interact with the external photon and they make a forceful transition. उसका लाइफ टाइम खत्म ही नहीं हुआ है, उससे पहले वो उसे ट्रांजिशन करने के लिए फोर्स करेगा. दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रिगरिंग. दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रिगरिंग फोर्सफुल ट्रांजिशन. एंड व्हेन इट मेक ए फोर्सफुल ट्रांजिशन, सो इसमें जो एनर्जी थी फोटोन एनर्जी वो भी रिलीज करेगा वो एक डायरेक्शन में, और उसके साथ जिसने उसको फोर्स किया था उसकी फोटोन एनर्जी भी वो चली जाएगी आगे. सो ऐसे दो आइडेंटिकल फोटॉन्स इमिट होंगे इसमें से, ये इंसिडेंट वन एंड दिस इमिटेड, राइट. बट इट्स फोर्सफुल ट्रांजिशन. अब ये नीचे आ गया. अब ये दो फोटोन है जिनके पास एनर्जी है. अब मान लो कि ऐसे दो है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जिनका लाइफ टाइम खत्म नहीं हुआ है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये फिर ये फोटोन क्या करेगा, ऐसे दो और इमिट करेगा क्योंकि ये खुद ऐसे जाएगा मान लो, और इसका एक दो हो गया, और सेम ये क्या करेगा और दो More, करेगा. sir. तो कितने बने? 4. बट दे आर आइडेंटिकल, रिमेंबर, Yes, sir. लाइक ट्विंस. अब ये 4 क्या करेंगे, और 4 को ट्रिगर्ड करेंगे एक्साइटेड को, और इनके बनेंगे 8. 8 बनेंगे, लाइक दिस. सो 8 identical photons are emitted here. And okay, so this is called as a stimulated emission. Stimulated means forceful transition, and they emits the identical photon जो पहले नॉन रेडिएटिव थे रैंडम डायरेक्शन में, अब ऐसे नहीं है, ये एक यूनि डायरेक्शन में. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, But sir. this is whole. So see, photon is incident on excited atom through optical pumping. जो भी हो, एक्सटर्नल फोटोन आ गया और किसके साथ इंटरेक्ट हुआ है? एक्साइटेड एटम के साथ. बिफोर इमिशन ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, वो खुद इमिट करने से पहले. और फिर उसने क्या किया, मान लो कि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ था तो इस डायरेक्शन में उसने रिलीज किया. बट टू आइडेंटिकल फोटॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड इमिशन. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो और एक बेनिफिशियल क्या होगा, सी, अगर मेरे पास एक एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट, जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है, और मेरे पास और एक एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है, कौन सी स्टेट में एटम्स ज्यादा टाइम रुकने वाले हैं? 10 to the power -3. -3. So there is one adjustment or say some doping of the external material. तो जो इस मटेरियल का, जिस भी मटेरियल का ये एटम और जो एनर्जी स्टेट है, इसमें और एक मटेरियल हम ऐड करेंगे जिसका एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻³ होगा. आपको ये पता चलेगा अब कि जितना टाइम एटम ज्यादा रुकने वाले यहाँ पे या इस स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में, उतना एनर्जी रेडिएशन क्या होगा, इमिशन ज्यादा होने वाला है. Yes, sir. मान लो कि ये दो एटम ही नहीं होते यहाँ पे, तो ये दो क्या 4 करते क्या? No, sir. अब ये 4 को और No, sir. 4 चाहिए ना. अगर यहाँ Yes. के जल्दी नीचे आ गए तो फिर 4 नहीं मिलने वाले. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एटम्स रुकने वाले उनका नंबर आपको बढ़ाना होगा, या नहीं बढ़ा सकते तो इस यहाँ का टाइम बढ़ाइए. तो ये टाइम हमने बढ़ाया बाय पुटिंग सम एक्सटर्नल मटेरियल, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ए मेटा स्टेबल स्टेट. व्हाट? Metastable state. So ground state, excited state, and one more state which is higher energy state is called as metastable. तो ये स्टेबल स्टेट है, ये अनस्टेबल स्टेट है, तो ये मेटास्टेबल स्टेट है. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. See, Yes, sir. okay, I'm Yes, going sir. to show see metastable state. So this is the fourth slide. So this is an intermediate state. Okay, this is a state has very low probability of decay the atom. कम probability, क्योंकि इसका टाइम कितना है, ध्यान में रखिए, -3 सेकेंड, तो ज्यादा टाइम रुकने वाले एटम. सो एटम स्टे फॉर द लॉन्गर टाइम इन दिस स्टेट. ओके, सो द लाइफ टाइम इज मोर देन द एक्साइटेड स्टेट. ओके, दैट इज 4 सेकेंड मिनट्स है. समझ में आ गया सबको? सो व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट? इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट हुज लाइफ टाइम इज 10⁻³ सेकेंड. इट इज अ 3 एक्साइटेड seconds. स्टेट, हाँ, ध्यान में रखिए, हायर एनर्जी स्टेट है ये, एंड विच इज Yes, sir. Yes, तो sir. ये एक ध्यान में रखिए.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको समझ में आ गया व्हाट इज absorption, then spontaneous emission and stimulated emission. Yes, sir. So which Yes, sir. emission gives us the coherent source or coherent light? Stimulated. Simulated. है ना? Stimulated. स्पॉन्टेनियस में क्या फर्क है? स्पॉन्टेनियसली लाइट जो इमिट होती है दैट इज इन रैंडम डायरेक्शन एंड हियर दैट इज इन एनी डायरेक्शन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll go for the next. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So यहाँ तक आए थे. Then which are the basic requirement of lasing action? तो इसमें पंपिंग होना नेसेसरी है. हम देखेंगे वन बाय वन पंपिंग क्या होता है. मेटास्टेबल स्टेट समझ में आ गया आपको? ये इंपॉर्टेंट है होना. Yes, sir. पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है देखेंगे. एक्टिव सिस्टम देखेंगे. स्टिमुलेटेड इमिशन समझ में आ गया सबको. Yes, sir. एंड रेजोनेंट कैविटी ये होना चाहिए. तो इसमें से हमने 1 और 2 ऑलरेडी कवर्ड किया है. ठीक है. नाउ विल सी वन बाय वन द नेक्स्ट रिमेनिंग. सो फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड. ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है क्या? बताइए. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन इज पंप्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी. पंपिंग सिंपली मैं बताता हूँ पंपिंग क्या होता है. सो पंपिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का एटम सी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एटम है उसको एक्सटर्नल एनर्जी देके वो कहाँ पे शिफ्ट करना है हमें? Excited. Excited state. This process is called as a pumping. समझ में आ गया? So pumping is a rising of atom from ground state to the excited state. So here electron is pumped, atom is pumped to the higher energy state. Pumping level is unstable. हमें पता है ये जो लेवल है ना वो अनस्टेबल होती है. So that electron quickly jump to the slightly lower. क्योंकि Yes, sir. यहाँ पे टाइम बहुत कम है तो यहाँ से नीचे आएगा वो जहाँ पे ज्यादा टाइम होता है. फिर यहाँ से नीचे आएगा and that emits the photon. But that is random. Yes, अगर sir. इसको किसी ने ट्रिगर्ड किया है तो फिर आइडेंटिकल फोटोन इमिट करेगा अदरवाइज नहीं. तो ये स्टिमुलेटेड इमिशन इज पॉसिबल इन हायर एनर्जी स्टेट. आइदर यू कैन से एक्साइटेड और इन मेटास्टेबल स्टेट. इन बोथ द स्टेट इट इज पॉसिबल. तो ये ध्यान में रखिए. तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ है तो 2 फोटोन निकले और फिर आके देखेंगे क्या होता है. ठीक है. Then we come to the pumping. So pumping समझ में आ गया. The method of rising atom from lower energy state to the higher energy state. Okay. So there are different pumping scheme. Okay. So optical pumping होता है एक. Pumping के different types है. तो pumping में like electrical discharge, optical pumping and PN junction जैसे कि डायोड में होता है. दैट विल एक्सप्लेन. सो ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू डिस्कस द ऑप्टिकल पंपिंग इज व्हाट द एक्सटर्नल पंपिंग. देखिए पंपिंग क्या है कि आपको ग्राउंड स्टेट का एटम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है. इट्स वेरी सिंपल. बट इफ यू वांट टू shift or make a excitation of the atom from ground to the excited, you need a energy and you need a something photon energy like. So here we are providing the light's energy and that is called as a optical pumping. So in optical pumping we need a light energy to shift the atom from ground to the excited. Clear? Yes, sir. ऑप्टिकल पंपिंग में ध्यान में रखिए कल ऑप्टिक एक्सिस लर्न किया था. ऑप्टिक. अब आज हम ऑप्टिकल पंपिंग बोल रहे हैं. ऑप्टिकल पंपिंग ये है कि लाइट यूज करके लाइट एनर्जी यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स या एटम को ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं. सो रिमेंबर ऑप्टिकल पंपिंग में लाइट एनर्जी यूज की जाती है. सो देयर आर 3 स्कीम ऑफ द पंपिंग. सी ऑप्टिकल पंपिंग, thermal pumping and electrical pumping. Here we use a light source to pump the electron like flash lamp. Thermal pumping, it is used with the help of heat energy. Electrical pumping use the electricity like some AC current is given. Okay, so like remember in ruby laser optical pumping मतलब जो गैस है या जो मटेरियल है like some ruby पीस तो हम एक्सटर्नली लाइट फोकस करेंगे इसके ऊपर तो वहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जो थे वो चले जाएंगे या डी एक्साइटेशन करेंगे. यहाँ पे
some electric power we are connecting here, so AC current is given to this, so elect gas को तो discharge of gas होगा, तो ये आपको देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंपिंग यहाँ पे है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि पंपिंग होता क्या है और फिर कौन सी एनर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यदि? Yes, sir. No doubt. देन मेटास्टेबल स्टेट हो गया। नाउ कम टू द पॉपुलेशन इन्वर्जन। नाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। है क्या? ऑलरेडी वी नो एटम कहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं ज्यादा रुकने में? Stable ground. Stable energy. Ground state. तो मान लो कि यहाँ पे कुछ 100 एटम है, आई विल कॉल दिस इज N1। कितने एटम्स है ग्राउंड स्टेट में? N1 ओके। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, वो जो इक्वेशन है वो अगर आपको चाहिए तो भी मिलेगा, नहीं तो उसमें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, दैट नॉट नेसेसरी टू मेंशन हियर, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। So you can remember in the ground state N1 be the number of atoms. Now the external energy is provided or incident on this system. So this is the energy in the form of light or tell me electric Thermal. energy or heat. Okay, so this kind of energy is provided. Now this energy is absorbed by the atom. Now see, यहाँ पे कितने एटम्स होंगे उस टाइम पे बिफोर ये एनर्जी इंसिडेंट करने से पहले? N2। यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, कौन ज्यादा होंगे? N1. N1 is obviously greater than N2। अब जैसे हम एनर्जी इंसिडेंट करेंगे तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करके कहाँ चले जाएंगे? E2 में. E2 लेवल में। अब बहुत सारे एटम्स E2 में चले गए, तो बताइए कौन ज्यादा हो गया? N2. N2। The situation is now reverse. N2 is too much greater than N1. So this is called as a population inversion। पहले ये population था इसे, जहां पे ज्यादा एटम वहां पे population ज्यादा, तो अभी inversion हो गया। So it is also called as negative temperature state। ये MCQ में आ सकता है। Population inversion is also known as Negative temperature. Negative temperature negative state. temperature state। समझ में आ गया? तो पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम पहले केस में नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर दैट इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट एज कंपेयर टू द मोर होते हैं एज कंपेयर टू द हायर। सबको पता चला ये पहले सिचुएशन है Yes, sir. एट थर्मल इक्विलिब्रियम। Okay, now thus by using a technique of non-equilibrium position like applying external for that energy, it is created in which the population of higher energy level is more than the lower energy level. At this position population distribution is inverted. This is called as a population inversion. So population inversion you can simply define as the number of atoms are more in excited state than the Ground state. ground state. So you can say N2 is too much greater than N1. This is also called as a negative temperature state. Okay, and why the population inversion is necessary in a laser? Can anybody tell me? To get coherent shape. Yes, because we To want produce the maximum atom rays. for stimulated emission. हमें stimulated emission के लिए atoms चाहिए excited state में। Yes, sir. अगर population inversion नहीं होता है तो number of atoms are less in a excited state. So we need a population inversion. For that we need more number of atoms in a Excited state. clear. So Yes, N1 Yes, sir. से ज्यादा N2 अब ज्यादा हो गया। So this is some figure you can say, जितने नंबर ज्यादा उतना कोहेरेंस लाइट ज्यादा। Now active medium. So remember the definition only, active medium in which the population inversion is achieved। ऐसा मीडियम जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। समझ में आ गया? जिस मीडियम के कारण पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। अब एक चीज और भी ध्यान में रखिए,
अगर यहाँ का लाइफ टाइम अगर कम होता है तो आप कितने भी एटम को ऊपर सेंड करिए ना, फिर वो नीचे आने वाले हैं। तो आपको ऐसा मटेरियल यहाँ पे ढूंढना है कि जिसका लाइफ टाइम ज्यादा हो, जिसमें मेटास्टेबल स्टेट हो। समझ में आ रहा है? तो उस मटेरियल को हम एक्टिव मटेरियल बोलते हैं, एक्टिव मीडियम बोलते हैं। सो एक्टिव मीडियम, अ मीडियम इन विच द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। ठीक है, तो फिर वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। लाइक हीलियम नियॉन में, हीलियम नियॉन में न्यूऑन मान लो एक्टिव मीडियम है, रूबी में रूबी मटेरियल एक्टिव मीडियम है, like so on. So you have to just keep it is in mind. So some active medium is necessary because in which the population inversion is achieved. ठीक है? So some types of lasers you should have to know. Solid state laser, जिसमें रूबी लेजर का नाम आता है। सॉलिड स्टेट मतलब मटेरियल है कोई मेटल टाइप का, तो ये सॉलिड मटेरियल है। रूबी इज ए पिंक इन कलर, सो रूबी लेजर। ओके, सो ये पिंक रूबी मटेरियल है जिससे सॉलिड लेजर बनता है। लिक्विड लेजर है, सो 6G रोडामिन, तो ये आपका लिक्विड लेजर है। सो यूजिंग द लिक्विड द लेजर लाइट कैन बी इमिटेड। गैसेस लेजर, हेलियम एंड नियॉन, रेड कलर का लाइट इमिट होता है, तो ये गैस लेजर है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। देन व्हाट इज द रेजोनेंट कैविटी, एक पार्ट रह गया रेजोनेंट कैविटी। ओके, यहाँ तक Yes, कोई sir. डाउट है क्या, बताइए। No, sir. No, sir. No, sir. रेजोनेंट कैविटी ये होती है कि आपने जो मान लो कि आपके पास अभी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, हमें पता है कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ पे कोई मेटास्टेबल स्टेट है, और ये एटम्स ने एनर्जी एब्सॉर्ब की चला गया है ग्राउंड एक्साइटेड में। ओके, अब यहाँ पे उसके साथ फोटोन का इंटरेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये नीचे आ गया जल्दी। अब यहाँ पे 10⁻⁻8, यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पे तो इस फोटोन के ये नहीं मिला है ना, यहाँ पे नहीं मिला बिकॉज इट्स वेरी लेस टाइम, सो इट विल फॉल डाउन। But here that can rest for the longer time. And you can say this is N2 and this is N1 and this is N3. So if we compare with the ground state, the number of atoms are more. So population inversion is more here in this state, metastable state. And that is the reason we need a metastable state, because we want population inversion in higher energy state. So now the some photon energies interact with this and make a forceful transition from here to here. So when this fall down, they emit the identical photon to the incident one. Is it fine? Yes. अगर ये एटम इस एटम को कोई फोर्सफुली ट्रांजिशन करता है तो यहाँ पे भी आइडेंटिकल फोटोन इमिट होने के चांसेस है, बट दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस। गॉट इट? Yes, sir. Okay, so more lasing action will be produced from metastable to the ground. तो चलो मान लो कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल फोटोन इमिट हुए, दो के चार बन गए, ऐसे चार के ऐड बन गए। अब ये कहाँ पे आएंगे? सी ईयर, ये हमारा कैविटी है। कैविटी में है क्या? रेजोनेंट कैविटी में, सो वन एंड इज फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड वन इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ध्यान में आ रहा है? एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, एंड दिस इज इन कैविटी। ये सब कहाँ पे? एक Cavity. कैविटी में, लाइक कॉर्ड्स ट्यूब है ऐसा मान लो। यहाँ से तो लाइट बाहर निकले के चांसेस बहुत कम है। अब मुझे बताइए, ये दो के चार बन गए, चार के ऐड बन गए, ऐसे करते करते कुछ नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है बीच में, स्पॉन्टेनियस इमिशन भी हो सकता है, तो ये दिखाया स्पॉन्टेनियस लिमिट हुए। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन में चले गए। अब यहाँ चार के ऐड बन गए और कहाँ पे इंसिडेंट हुए? ये पार्शियली Partially. रिफ्लेक्टिंग मिरर के ऊपर। अब ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब क्या कि अगर इनकी इंटेंसिटी सफिशिएंट है, इंटेंसिटी ऑफ बीम इज सफिशिएंट, देन दे कैन एस्केप, ये बाहर निकल पाएंगे।
अगर कम इंटेंसिटी है तो फिर रिटर्न जाएंगे ये। अब जब ये यहां से रिटर्न निकले तो जाते जाते ये क्या करेंगे, 8 के 16 बनेंगे, 16 के 32 Yes, sir. बनेंगे, 64 बनेंगे, और इस एंड पे आएंगे। अब इस एंड पे 64 आ गए मान लो, तो यहाँ पे तो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, यहाँ पे इससे बाहर निकलने के चांसेस 0 है। Yes, sir. फिर ये रिटर्न आएंगे, और फिर आते आते ये 128 और 256 एंड सो 56. लाइक इंक्रीज होंगे रेस, एंड अब इनकी इंटेंसिटी उतनी है कि जो एस्केप करे बाहर, तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए लेजर बीम। तो व्हाट इज द रोल ऑफ रेजोनेंट कैविटी? To increase the To intensity. intensify the Increases. इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बीम टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, है ना। तो ये ऐसे बनेंगे और फिर यहाँ से एस्केप होंगे। देखिए ये पहले इतने इंक्रीज हुए, फिर बाहर निकले, रिटर्न गए, फिर ऐसे रिटर्न आ गए, सो दैट इज एस्केप्ड। समझ में आ गया? तो रेजोनेंट कैविटी क्या है? सो सेम थिंग इज हियर। Yes, ये sir. लेजर बीम यहाँ पे fully reflecting mirror, photon by stimulated, okay, photon escape हुआ है partially reflecting से, तो resonant cavity। So you can rate this a cavity which is constructed by using fully reflecting mirror at one end and partially reflecting mirror at other end, such that photon is emitted by stimulated emission oscillate back and forth, and the frequency of emitted photon by spontaneously emission which acts as a stimulated photon and stimulates the other electrons metastable state. So, and the frequency of photon generated by a stimulated photon, that is stimulated photon, are the same than the resonance occurs, and photons travel along the optic axis in the cavity for the certain number of times, and when it attains the high energy, then it emerges out from the high intense laser beam from the resonant cavity through the partially reflected mirror along the optic axis only. Such cavity is called as a resonant cavity, and these are the structure of resonant cavity. Fully reflecting mirror silvered, partially silvered, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। यू कैन ऑब्जर्व एक्चुअली लाइक दिस, ओके, लाइक पैरेलल, ये पैरेलल है, ये स्पेरिकल है, कर्व है, ऐसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ओके, सो देन 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल लेजर। तो बेसिकली 2 लेवल लेजर ध्यान में रखिए, ये पॉइंट खत्म करके मैं स्टॉप करूंगा। 2 लेवल लेजर क्या होते हैं, 3 लेवल क्या होते हैं, 4 लेवल। just keep it in mind. The example of 2 level is semiconductor diode laser, 3 level solid state laser like ruby, okay, and 4 level is a gas laser helium neon, and यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। अब 2 लेवल 3 लेवल क्या होता है, इन शॉर्ट आई विल टेल यू। 2 लेवल लेजर मतलब जिसमें ग्राउंड स्टेट होता है एंड एक्साइटेड स्टेट होता है, ये हो गया 2 लेवल। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. 3 लेवल में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट। तो ये एटम यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपको इमिशन लेजर का यहाँ से यहाँ भी प्रोबेबल है और यहाँ से यहाँ पे भी प्रोबेबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes. And 4 level laser, it Yes, means sir. it has a 2 metastable state, one ground state, second excited state, and these are the 2 metastable state. So again lasing action is possible from excited to first meta or excited to second meta or like this, but यहाँ पे chances कम होते ही है। क्लियर? Yes, sir. Yes. कोई डाउट है इसमें? 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल में No, sir. कोई डाउट नहीं होगा, एंड No, sir. ये ध्यान में रखिए। नाउ डायरेक्टली विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेजर, दैट इज सेमीकंडक्टर लेजर, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एंड सेमीकंडक्टर डायोड लेजर ये दोनों लर्न करने हैं, ठीक है, एंड देन वी गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लेजर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश द टाइप्स ऑफ लेजर, and in third lecture we'll go for the application. So almost in 3 lectures we have, so just remember this topic is divided into 3 parts. One is some basic requirements of laser, that is till this point. Second one is the types of laser, that 2 lasers we have to finish, and third is a applications of laser, okay. तो वो 3 पार्ट, तो उसमें से applications of lasers that is for your self study preparation, okay. तो ये 2 पॉइंट्स वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। Sir, यस sir, in